थैंक यू बेटा, विजुअल इस्टेब्लिश करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो तकरीब का आगाज़ किया जाए। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम कारी एहसानुल्लाह काकड़ आके तलावत कुरान करीम फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि वो उन्हें ज़रूर ज़मीन में अपना खलीफा बनाएगा, जिस तरह उनसे पहले लोगों को बनाया था, और उनके लिए इस दीन को ज़रूर इक़्तिदार बख्शेगा जिसे उनके लिए पसंद किया है, और उनको जो खौफ लाहक रहा है उसके बदले उन्हें ज़रूर अमन अता करेगा। बस वो मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और जो लोग इसके बाद भी नाशुक्री करेंगे तो ऐसे लोग नाफरमान होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के तहत नौमुंतखब सदर पाकिस्तान से उनके ओहदे का हलफ लें। Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I Asaf Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim swear that I am a Muslim and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the books of Allah, the Holy Quran, the Holy Quran being the last of them, being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, as last of the prophets, and that there can be no prophet after him, and that there can be no prophet after him, the day of judgment, the day of judgment, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah,
that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being, and prosperity of Pakistan, that I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President of Pakistan, except as may be required for the due discharge of my duties as President. May Allah Almighty help and guide me.